Hello children, hope everything is going fine and you all are in sound health. In the last class, we studied about the introduction of noun, its 5 kinds, and we also discussed about 2 kinds in detail, that is common and proper noun. In today's class, I'll explain you 2 more kinds of noun, that is abstract noun and collective noun. So moving to third kind, that is abstract noun. Abstract noun is the name of qualities, ideas, emotions or you can say strong feelings, and such things cannot be seen, touched, smelt or tasted. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड्स हैं जिससे हम किसी का भी गुण, विचार, भावना को बता सकते हैं और इसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही इसका टेस्ट ले सकते हैं. Now I'll tell you first how abstract nouns are formed. Abstract nouns are formed by adding suffixes. Suffix means जो वर्ड के बाद में ऐड होता है. यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ड्राई. ड्राई फर्स्ट वर्ड है. उसके बाद एक वर्ड ऐड हुआ है NESS नेस. तो यहाँ पे NESS हो गया सफिक्स. सफिक्स हमेशा वर्ड के एंड में ऐड होता है. तो द वर्ड हियर इज ड्राई प्लस नेस, दैट इज ड्राइनेस. Here dryness is an abstract noun. Motherhood. Motherhood. Some abstract nouns end in y, जिसके लास्ट में y आता है, ty आता है और ity. जैसे joy, लास्ट में क्या आया? y. Beauty, ty. Responsibility, लास्ट में क्या आया? देखो ity. तो these are abstract nouns. Abstract noun ऐसे ही फॉर्म होता है. Some abstract nouns end in ion, जिसके लास्ट में ion आता है, tion आता है और ation, जिसके लास्ट में ation आता है. फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन. अब देखो इसके लास्ट में क्या आया है? ion. डिस्ट्रक्शन, tion. Last 4 words. Admiration, ATION. So here abstract nouns end in ION, TION and ATION. See few more sentences. The art teacher showed his creativity. Here art teacher is showing his quality. Art teacher अपना quality के बारे में बता रहे हैं कि वो creative है. So, what is the abstract noun over here? The abstract noun is creativity. Second example, happiness is the key to success. Here, happiness is showing a feeling. So, happiness is an abstract noun. The noun success is also an abstract noun which is formed from the word successful, and success means अचीविंग समथिंग और डिज़ायर, जिसका मतलब होता है कि हम कुछ अचीव या हासिल करना चाहते हैं. हम यहाँ कोई सक्सेस हैप्पीनेस के थ्रू ही गेन कर सकते हैं. चिल्ड्रन, सी द पिक्चर्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन द फर्स्ट इमेज द गर्ल्स ब्यूटी इज शोन. सो ब्यूटी हियर इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन द सेकेंड इमेज See, this man is showing his bravery. ये आदमी अपनी वीरता या बहादुरता को दिखा रहा है. So bravery here is an abstract noun. In the third image, you can see that the elephant is showing its wisdom, or you can say intelligence. So wisdom here is abstract noun. In the fourth image, the girl is showing her talent, her willingness to draw the portrait or the painting. So talent here is abstract noun. The fifth image is showing the image of a boy during his childhood. That is
ये बचपन के एज का बता रहा है ना. सो चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन द सिक्स्थ इमेज दिस बॉय इज गेटिंग नॉलेज आफ्टर रीडिंग बुक्स. इसको बुक्स पढ़ने के बाद क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है. सो नॉलेज हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन द सेवेंथ इमेज द मैन इज इन एंगर मोड. अब देखो कि इसका फेस गुस्से वाला है. सो एंगर हियर इज एन abstract noun. In the eighth image, see, there are four people who are friends and they are talking about their friendship itself. ये लोग दोस्ती निभा रहे हैं. So friendship here is an abstract noun. In the ninth image, the child is studying thoroughly for better education. बहुत अच्छे से पढ़ रहा है ताकि उसको education मिले. So education here is an abstract noun. In the 10th image, the girl has got ready for an adventurous trip. यहाँ पर ये लड़की को किसी ट्रिप पे जाना है, घूमने के लिए. So here adventure is an abstract noun. In the 11th image, the child is reading a story. And ये story पढ़ने के बाद वो imagine कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है. So he is forming some concept of what he read, right? So imagination here is an abstract noun. See, there's a lion who has caught the sheep to eat it. अब देखो ये लायन शेप को खाने के लिए ही पकड़ा है. जब लायन खाएगा इस शेप को तो उसको टेस्ट पता चलेगा कि कैसा है. So taste here is an abstract noun. There are some examples of abstract noun in your assignment, that is, you can see page number 15 and 16. Read it once yourself and after reading, learn them. Moving to the fourth kind, that is collective noun. Collective noun is the name given to a group of people or things. Collective noun वो noun है जिसमें हम लोग एक particular group को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, या उसका समूह को क्या बोलते हैं. For example, when there is a collection of students, जब बहुत सारे students एक साथ study करते हैं, then it is called a class of students. When there are many flowers, then its collection or group of flowers is called bouquet or bunch of flowers. When there are many keys, then the collection of keys is called bunch. When there are many puppies in one group, बहुत सारे puppies एक group में रहते हैं, then its collection is called litter. So the collective noun is litter. When there are many houses in a locality, or you can say a colony, then the collection of houses is called colony. When there are many dolphins in oceans, then their collection is called school, that is a school of dolphins. When there are many dancers on a stage, then the collection of dancers is called troupe. जब बहुत सारे डांसर्स एक ही स्टेज पे होते हैं तो डांसर्स का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं a troupe of dancers. When there are many robbers or dacoits, डाकू लोग का ग्रुप, then their collection is called gang. हम लोग बोलते हैं gang of robbers. See, when there are many stars in the sky, then it is called a galaxy of stars. Now see, there are many sheep in the ground. So, what will be its collection? Its collection is called a flock of sheep. Now everyone open page number 17 and see that there are many examples of collective noun given in the assignment. You all just read it once and do learn them by heart. After going through the topics explained to you, that is abstract and collective noun, you have to fill exercise 6 from page number 22 and exercise 7 from page number 23 yourself without taking help of anyone. बिना किसी के help के आपको exercise 6 page number 22 से and exercise 7
पेज नंबर 23 से सॉल्व करना है।